आई फील कि इंडिया में ना कॉस्ट टू फेलियर ज़्यादा लो है। For me, taking the risk, like to start a startup, was like really high. Like, सिलिकॉन वैली हैज़ दिस कल्चर वेयरइन दे विल spot a talent. what's the thought about like, you know, risks taking appetite? Like, so let me give you some context. Like, I come from very humble background, like lower middle class family, and for me, taking the risk, like to start a startup, was like really high. Like, was I had like, I had to first get a job and then save some money to improve the quality of life of the family and stuff. And what I see in the West, especially in the US, like they have money, like especially like the not every household, but percentage wise, they have like risk cushions. मतलब वहाँ पे like economy मतलब capital बहुत fluid है. हम्म। So that's why you see also the ability to take risk much higher कि हाँ यार मैं जॉब नहीं करूँगा मतलब I just कहते हैं कि या थोड़ी savings है and then I'll manage somehow. What do you think about that? Like, and especially the citizens जो हैं वो तो of course, and especially who have green card, uh, they I see them taking more and more risk, and that's why you see a lot of like this innovation in tech. या आई आई फील कि इंडिया में ना कॉस्ट टू फेलियर ज़्यादा लो है। तो आप 5 साल स्टार्टअप में दे दो एंड अगर वो स्टार्टअप नहीं भी चला 5 साल बाद भी बंद हो गया, not much would have changed because you wouldn't have spent much money on like say rent or eating out. You can go out, eat a meal for like 15 rupees, stay with your parents and save so Hmm. much money for 5 years, right? The cost to failure is very little in India and that's where it shines. इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि इकोसिस्टम मिसिंग है थोड़ा, लाइक वी हैव बीसीज एंड एंजल इन्वेस्टर्स बट वी डोंट हैव दैट सिलिकॉन वैली कल्चर। इनफैक्ट वो सिलिकॉन वैली का कल्चर है ना, वो यूएस में बाकी सिटीज़ में भी नहीं है। इट्स नॉट इन सियाटल, इट्स नॉट इन एलए, इट्स नॉट इन न्यूयॉर्क, इट्स नॉट इन सैन डिएगो, वो सिर्फ बे एरिया में ही है। टू गिव यू एन Hmm. आइडिया, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ पोलिश, तो ही वाज वो यूके से पीएचडी कर रहा था। ही एंड हिज एडवाइजर केम अप विद सम आइडिया। उसने छोटा-सा प्रोटोटाइप बिल्ड किया। ही गॉट थ्रू अ स्टार्टअप एक्सेलरेटर बेस्ड इन एसएफ। ही पुट हिज पीएचडी ऑन होल्ड, केम टू एसएफ। 3 महीने का बूट कैम्प था। 3 मंथ्स ही वर्क्ड ऑन अ स्टार्टअप। He he's raising he has like seed offers from at least 25 investors at this point lined up 3 महीने की उसके बाद, ठीक है। So Silicon Valley has this culture wherein they will spot a talent, they will see if the idea this talent is working on is amazing and they will be ready to put money into it. They do not care about how much returns you will get. They do care about that at some point, but initially in order to move it ahead they don't care, and that culture is very Silicon Valley. Like